Hello, everyone, and welcome. A warm welcome to this session, and a very happy Independence Day to everybody. Speaking of the Independence Day and the reason that we are all here, I mean, it's a big day, and as far as our community is concerned, our community of civil servants, our community of civil service aspirants, I think you guys, me, other people like us, we represent a certain special segment of other country. We represent a special segment of country because we are, I would say, more aware. हम connected ज़्यादा रहते हैं. We are definitely more attuned with what the country is doing because of the fact that we have to do it. And sometimes, we genuinely feel and we have a connection with the country from based on what we learn, etc., etc. But the question that I asked today in my write up, and I even sent you an email. I'm sure you must have received the email, you must have read it. The question is that Independence Day is a historical event, and that happened. It's very important. Obviously, it came with a lot of struggle, and one can only imagine that so much time has elapsed. इतना time निकल चुका है उस event से और आज की डेट में कि हम हमारे पास कोई collective memories नहीं है क्योंकि हमारी जनरेशन से पहली वाली जनरेशन डायरेक्टली इन्वॉल्व थी तो उन्होंने एक्सपीरियंस जरूर किया होगा कि कैसा रहा था व्हाट वाज द सिचुएशन आप सोचिए इमेजिन करिए एंड लेट्स जस्ट ट्राई एंड इंडल्ज जस्ट लिटिल बिट एंड आई प्रॉमिस यू आई वोंट बोर यू पुरानी और हिस्टोरिकल बातों में मैं बोर नहीं करूंगा आपको आई टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग ऐसा कब देखा है हमने recent टाइम्स में व्हाट हैव वी सीन इन recent टाइम्स which united all of a sudden into one group where one what affected one person affected everybody else. ऐसा recently कब हुआ है कि हम सब लोग एक कॉमन डेस्टिनी या एक कॉमन फेट के एक्सपीरियंस से निकले हों और जब कुछ देर के लिए चाहे वो कुछ ही देर की बात हो हम अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस भूल गए हों क्योंकि वो मैटर ही नहीं करते थे उस टाइम ऐसा एक इवेंट अभी हमारे साथ हुआ है बहुत बड़ा इवेंट कोविड कोविड में there was no distinction. There was actually no distinction between countries also. It was affecting everybody. तो एक उस लेवल का एक उस स्केल का एक्सपीरियंस इमेजिन करिए एक उस स्केल का एक्सपीरियंस हुआ होगा वहां के लोगों को हालांकि ये दिस इज नॉट अ एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन बिकॉज वी कैन नॉट रियली अंडरस्टैंड व्हाट दे वेंट थ्रू बट वो बहुत बड़े चेंज के थ्रू गुजरे थे पार्टीशन एक्सपीरियंस किया उन्होंने उनका बहुत डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस रहे होंगे जाहिर सी बात है एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट यस इट वाज कोविड ऑफ कोर्स कोविड में हमने ये एक्सपीरियंस किया अब what I want to emphasize on today, and I want to tell you something about the civil services of our country. I want to give you the reality. I want to give you the psychological and the bureaucratic reality of how our country was, what it is now, where it is going. If you want to be civil servants, if you want to participate in this game, if you want to participate in this arena, if you want to have a career in this job, एक जरूरी है कि आपको पता हो कि इसका कॉन्टेक्स्ट है क्या और इसके बारे में सोचा कैसे जाए अगेन आई एम नॉट गोइंग टू बोर यू विद अ lecture about where it was, in what year something happened, what Macaulay Commission did, etc. I'm not concerned with it. I'm concerned with what actually happened in the hearts of people, in the minds of people, what is happening in their minds now and what will happen in the future. And I want to tell you something about where our country is going as far as I can see it. जितना मुझे समझ में आता है जितना मैंने देखा है after having been inside the system and also having seen it from a large perspective. The long and short of it, ladies and gentlemen, the long and short of it is सिविल सर्विसेज करियर हमारी कंट्री में इसीलिए इतना मशहूर था द रीजन दैट इट वाज सो कवेटेड इतनी डिजायर है उसकी आजकल तो रीजन थोड़े से डिफरेंट हो गए आजकल द रीजन दैट इट हैज सो बिकम सो यू नो डिजायर्ड इट हैज बिकम इज बिकॉज आई थिंक सोशल मीडिया फेम मुझे लगता है बहुत सारे लोग फेम से अट्रैक्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन जो टॉपर्स होते हैं दे बिकम वेरी पॉपुलर एंड बिकॉज देयर वाज नो सोशल मीडिया बिफोर ये वाला फैक्टर नहीं था ज्यादा बहुत बड़ा फैक्टर ऐड हो चुका है फेम सोशल मीडिया की वजह से अट्रैक्टिंग मेनी पीपल एंड इट इज हैविंग एन इम्पैक्ट ज्यादातर हम अपने जो सिविल सर्विसेज के एस्पिरेशंस हैं वी डू इट बिकॉज ऑफ द फैक्ट बिकॉज ऑफ सोसाइटी लेट अस फेस द फैक्ट सोसाइटी की वजह से बहुत सारे लोग करते हैं सोसाइटी की वजह से लोगों को लगता है कि ये बहुत एक अच्छा करियर है और अच्छा करियर है भी इसमें कोई शक नहीं बट इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आपको मैं अगर सच बताऊं
इट इज नॉट अ वेरी गुड वन, बहुत इंस्पायरिंग नहीं है वो बात। ये करियर इतना मशहूर इसलिए था स्टार्टिंग में क्योंकि इसमें अनअडल्टरेटेड पावर थी। इट हैड अनअडल्टरेटेड पावर। यू कुड हैव अनफेटर्ड अथॉरिटी, राज। आप राज कर सकते थे इस करियर के थ्रू। ये कोई बहुत अच्छी या रिस्पेक्ट वर्दी बात नहीं है। दिस इज द थिंकिंग ऑफ अ टायरेंट, दिस इज द थिंकिंग ऑफ समबडी हु डज नॉट केयर अबाउट अदर्स। ये अपॉर्चुनिटी, दिस जॉब एंड दिस अपॉर्चुनिटी एंड बीइंग इन द गवर्नमेंट वुड गिव यू अ सर्टेन प्रिविलेज, बिकॉज इससे पहले तो बिफोर इंडिपेंडेंस, बिफोर 76 years, बिफोर 76 years of today, there was a completely different government and that was the British government, और उनके हिसाब से सब कुछ चलता था। जो बेनिफिट्स होते थे, जिसको स्पॉइल सिस्टम भी बोला जाता है, वहां से आप जितना लूट सकते हैं आप लूट लीजिए। उनको पता था ये ड्यूरिंग एटलीस्ट द एंड ऑफ द टाइम्स। And I'm sure even in the British times there were honest officers and dishonest officers, and most of the people would have been thinking on those lines. What happened after our independence is that हमने, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे देश ने, हमारे देश के लीडर्स ने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया। एक कॉन्शियस डिसीजन लिया, और कॉन्शियस डिसीजन ये था कि हमारा देश एक सोशलिस्ट एंगल पे जाएगा। देखिए, दो ऑप्शंस होते हैं, देयर आर ओनली टू फंडामेंटल ऑप्शंस फॉर अ कंट्री, और ये एक फंडामेंटल डिसीजन है। देश की प्रोग्रेस कैसे होगी, इट इज डिटरमिन्ड बाय व्हाट इकोनॉमिक मॉडल इज अडॉप्टेड। एक इकोनॉमिक मॉडल है कैपिटलिज्म, एक इकोनॉमिक मॉडल है सोशलिज्म या कम्युनिज्म। थोड़ा सोशलिज्म का एक्सट्रीम वर्जन कम्युनिज्म होता है, बट अभी हमको उस डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है। एसेंशियल बात यह है कि हमने कॉन्शियस डिसीजन लिया कि हम सोशलिस्ट डायरेक्शन में जाएंगे। अब सोशलिस्ट डायरेक्शन में व्हेन वी वेंट इन दैट डायरेक्शन, सम थिंग्स डिड नॉट वर्क, सम थिंग्स वर्क। हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हुए बाहर के देशों पे। हमने उनका कल्चर एकदम से कॉपी नहीं करा। हमने कोशिश करी कि वी शुड ट्राई एंड डू एवरीथिंग इन हाउस। वी वांटेड टू बी सेल्फ रिलायंट। अ न्यू वेरिएंट ऑफ दिस सेल्फ रिलायंस इज व्हाट वी कॉल आत्मनिर्भर नाउ, which is recent, but उस वक्त it was taken as a gospel and as a proper economic policy। किसी के ट्रेड पे, किसी की इंपोर्ट पे डिपेंड नहीं होना है, हमको सब कुछ इंटरनली करना है। हम अपनी इंडस्ट्री खुद बनाएंगे। हम अपने जो वेल्थ है, हमारे देश की वेल्थ, हम ऐसे किसी को बांटने नहीं देंगे, हम उसको कंट्रोल करेंगे। वी विल कंट्रोल वेयर द वेल्थ गोज, वी विल कंट्रोल हु होल्ड्स इट, एंड दिस इकोनॉमिक पॉलिसी डिड नॉट डू वेरी वेल। बहुत अच्छा प्रोग्रेस नहीं हो पाया इससे, एंड वी काइंड ऑफ सफर्ड, बिकॉज कुछ शायद मिसकैलकुलेशन हो सकती है इस चीज में। ह्यूमन नेचर एक एलिमेंट है जो इकोनॉमिक पॉलिसीज कंसिडर नहीं करती, और ह्यूमन नेचर थोड़ा सा ऐसा है कि अगर उसको कोई बेनिफिट करने का एडवांटेज मिलेगा या मौका मिलेगा तो जरूरी टेम्पटेशन होगा, चाहे वो ले या ना ले, टेम्पटेशन जरूरी है। द पीरियड आफ्टर इंडिपेंडेंस, the period after independence up till the time 1991, up till 1991 at least, the first 40 years or so, there was a suspicion, there was a suspicion ब्यूरोक्रेट्स के मन में, सिविल सर्वेंट्स के मन में, गवर्नमेंट के मन में बिजनेस को लेकर एक सस्पिशन, जनरल सस्पिशन का एटीट्यूड होता था, और ये माना जाता था कि बिजनेस इमोरल है। बिजनेस, कॉमर्स, इंडस्ट्री, ये जो लोग पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, ये वेल्थ एक्यूमुलेशन इमोरल है फंडामेंटली, और हमारा तो ये पॉलिसी ही नहीं है कि हम इस डायरेक्शन में जाएं। दिस वाज आवर अडॉप्टेड स्टैंड। और क्योंकि ये डायरेक्शन ली गई, देयर वाज अ वेरी टाइट कंट्रोल ओवर बिजनेस, देयर वाज अ वेरी टाइट कंट्रोल ओवर इंडस्ट्री, देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज इंस्पेक्टर राज। इंस्पेक्टर राज एक वर्ड आप सुनेंगे, पढ़ेंगे पॉलिटी में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। यू नो व्हाट दैट मीन्स? एंड दैट एसेंशियली मीन्स that every factory used to have an inspector posted at the gate, and the government had a taxation, a central excise taxation। जो excise अभी तक था, अभी recently GST की वजह से it has been replaced, but उस टाइम पर जब ये होता था तो that inspector would have complete control, और हर एक शिपमेंट जब फैक्ट्री से बाहर जाती थी तो उसको इंस्पेक्टर का अप्रूवल चाहिए होता था। कहने का मतलब ये है, इंस्पेक्टर राज बेसिकली मीन्स एवरीथिंग रिक्वायर्ड अप्रूवल्स। ओके, नथिंग वाज ऑटोमेटिक, नथिंग वाज मैंडेटरी। हर चीज की चेकिंग, हर चीज का वेरिफिकेशन, और इसका मतलब जाहिर सी बात है हर चीज में ज्यादा टाइम लगता था। ऑफ कोर्स इट लीड्स टू रेड टेप। you need to meet 5 different people, 5 different signatures to get your clearance for anything। कोई परमिशन लेनी हो या कुछ लेना हो, तो गवर्नमेंट के साथ डील करना आसान नहीं था।
It was difficult to deal with the government. The reason that it was difficult to deal with the government is because the system was very cumbersome, and the people who were in it, the bureaucrats, they took advantage of this, and they took advantage of it a lot, and this led to some unfortunate consequences. इंडिया में बिजनेस करना एक देयर इज अ रिपोर्ट which you will read about this report, आप न्यूज में भी देखोगे, और काफी रेलेवेंट है ये चीज आज की डेट में भी. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है एक कंट्री की प्रोग्रेस का, बिकॉज बिजनेस इज लिंक टू इनोवेशन. कुछ हम में भी वी ऑल ऑफ अस हम सब कलेक्टिवली, हमको ये बचपन में ये चीज थोड़ी सी इंडोक्ट्रिनेट कर दी गई हमारे मन में कि बिजनेस, कॉमर्स, ये वेल्थ एक्यूमुलेशन, ये सब गलत चीजें हैं, ये सब चीजें गंदे लोगों की हैं. दीज आर नॉट थिंग्स विच आर वेलकम. अब ये रियलिटी चेंज हो रही है. इट इज चेंजिंग फास्ट. इंडिया इज अडॉप्टिंग अ मोर कैपिटलिस्ट स्टैंड. एवरीथिंग इज चेंजिंग. हर चीज धीरे धीरे इंडिया में चेंज हो रही है. लुक आउटसाइड योर विंडो. इज दिस द सेम कंट्री दैट यू सॉ 5 years ago? 5 साल पहले जो हो रहा है अब, क्या वो हो रहा था? Technology has penetrated everywhere, right? Everything you see, more or less everything you see, with some exceptions, is seems to be improving. हम उस इम्प्रूवमेंट के पाथ पे जा रहे हैं, और बहुत हद तक वो इम्प्रूवमेंट इसलिए है कि ऑन्टरप्रेन्योरशिप और बिजनेस और कुछ रिफॉर्म्स की वजह से दिस इकोनॉमिक ग्रोथ हैज अकर्ड. नाउ द थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज अबाउट पावर. दिस इज इंपॉर्टेंट. पावर. व्हाई आर यू अट्रैक्टेड टू दिस इमेज? ये इमेज आपको क्यों अच्छी लगती है? बहुत लोगों को अच्छी लगती है ये इमेज. इट अपील्स टू देम, इट अपील्स टू पीपल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी. काश हम उस गाड़ी में बैठे होते और हमारे आसपास इतने पीएसओस होते, इतने गनमैन होते. क्या बात होती. ऐसे इस गाड़ी में जाके हम जाते अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, या अपने उसमें, मैं तो पता नहीं, हमारी इज्जत ही कुछ अलग लेवल पे हो जाती. दिस आइडिया, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज टॉक्सिक. This thought is toxic. बिना रियलाइज करे, this is the road which leads into corruption. This is the road which leads to misuse of authority. This is the slippery slope which leads you away from ethics. This happens almost automatically. इतना सटल है ये, इसका इफेक्ट, पावर का नशा, पावर का इफेक्ट इतना ज्यादा सटल होता है कि पता भी नहीं चलता है कि कब चढ़ जाता है. एंड Hemlata, Krishna, Swati, all the students, there is a difference between power and respect. There is a difference between power and respect. Power does not equate to respect. Power is completely different from respect. I'll tell you what power is. And you and I both experience this. Power वो होती है जो हमको फील होती है जब हमारे पास पावर नहीं होती और कोई हम पे जता रहा होता है. You feel power when somebody is enforcing it on you. That is the only time you feel power. जब आपके पास पावर है तब आपको फील नहीं होती है कि आपके पास है. You understand what I'm saying? That is what power is. It leads us onto this path, and it leads us because nobody wants to feel powerless. हमको पावर चाहिए या नहीं चाहिए, that's a different question. It's a different ethical question. हमको पावरलेस नहीं फील करना है, ये क्लियर है. पावरलेस नहीं फील करना है तो फिर ऐसी गाड़ी होनी चाहिए और ऐसे पीएसओ होने चाहिए ताकि हमसे कोई पंगा ले ही ना सके. दिस थॉट, लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर इफ यू आर थिंकिंग दैट दिस थॉट एंड यू विल, दिस इज योर एम्बिशन, then you are not doing the UPSC preparation with a clean heart, unfortunately, and that's the truth. That is the truth. This is not the correct motivation for it. चाहे जो भी motivation हो सकता है that you become and you get engrossed in it. I will tell you in pieces what this is, but I'll tell you something interesting, something interesting about power. Power, is a very, very intoxicating thing. बहुत इंटॉक्सिकेट कर देती है पावर. मैं आपको बताता हूँ क्यों. मैंने एक्सपीरियंस भी करी है, मैंने बाकी लोगों को एक्सपीरियंस करते हुए देखा भी है. What happens when you have power is very interesting. साइकोलॉजी का एक ब्यूटीफुल केस स्टडी है. अगर आपके पास पावर है, आपके पास पावर इसीलिए होगी एज अ ब्यूरोक्रेट बिकॉज यू होल्ड अ सर्टेन पोस्ट. आपको डेप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर,
डीएम, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कमिश्नर, जो कुछ भी है उसका एक खिताब दिया गया है, उसकी एक जगह दी गई है। यू बीन गिवन दैट सिंबॉलिक रोल। वो एक रोल है, ठीक है, एक रोल है, वो उससे ज्यादा वो कुछ नहीं। कुछ देर के बाद ऐसा होता है कि जो हमारे आसपास लोग होते हैं ना, द पीपल अराउंड अस, आवर सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स, आपके जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स होंगे, आपके आसपास की जो फैमिली होगी, फ्रेंड्स होगी, वो आपको बहुत ज्यादा इज्जत देने लग जाएगी एकदम से। ऑल ऑफ अ सडन दे विल स्टार्ट टू गिव यू अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। आपको लगेगा ये तो, मैं तो स्टार्टिंग से वेट ही इसकी कर रहा था, मैं तो रिस्पेक्ट के लायक हूं ही। आप थोड़ी देर में यू स्टार्ट टू गेट अंडर द इल्यूजन दैट यू आर एक्चुअली स्पेशल। एंड यू नो द थिंग विच कंपाउंड्स द इल्यूजन, the thing which compounds the illusion is the fact that you cleared this exam. अब आपने एग्जाम क्लियर कर लिया है तो ऑब्वियसली आप कुछ तो स्पेशल हो ही, और अब आपको इज्जत दे रहे हैं तो यह तो आपका हक है। दिस इज योर एंटाइटलमेंट, दिस इज कॉल्ड एंटाइटलमेंट, यू नो, एंड दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग। जैसे जैसे आपके आसपास वाले जो जितने भी लोग हैं, ऑल द पीपल हु आर पैंडरिंग टू योर ईगो, all the people who are giving you offerings and being very nice to you and very sweet to you, and they are, you know, wishing you happy birthday, good day, good afternoon, good night, good lunch, good water, whatever, every one of these people want something from you. They want something from you. That is the reason that they are so concerned about you. And we forget this. ये हम भूल जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग भूल जाते हैं इसको। बहुत बहुत मुश्किल से खुद को ये याद दिलानी पड़ती है बात कि मुझे ये इज्जत सिर्फ इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि मैं खास हूं और आई एम स्पेशल और एनीथिंग, आई एम गेटिंग दिस रिस्पेक्ट बिकॉज दैट पर्सन वांट समथिंग फ्रॉम मी, नथिंग मोर देन दैट। What ultimately happens is that when you get power, your true nature is revealed. Your true nature is revealed. अगर ये गोल है, इसको अभी से चेंज कर दीजिए आप, चेंज इट। दिस इज नॉट द रीजन टू गेट इनटू द सिविल सर्विसेज। हालांकि यू मे गेट इट, बट इट विल कम एट द कॉस्ट ऑफ योर एथिक्स, guaranteed. There is no doubt about it, and it will reveal your true nature. It will reveal your true nature. Now tell me about something more, something interesting. Corruption. करप्शन इज अ फिनोमिना हमने सबने एक्सपीरियंस करी है कभी ना कभी लाइफ में। एक्सपीरियंस नहीं करी तो सुनी तो जरूर होगी। इट इज ऑलवेज देयर। You know, I have heard all these different types of arguments about in favor of corruption in my life. I have heard an argument, and that argument is that corruption is the reason that we win. Corruption is the reason that things become efficient. Corruption is the thing that actually you can get an advantage and all that. It is not easily, discernible, and it's not easy to really break this apart. But I did some research on this, and I read a few research articles on this corruption. Corruption का ultimate जो crux है, वो ये है कि it is a disease. It is not good. पूरे के पूरे सिस्टम को धीरे धीरे इरोड कर देती है करप्शन। व्हाई डज दिस? इज बिकॉज वेरी सिंपल लॉजिकल रीजन। अच्छा बुरा इमोरल एथिकल की बात नहीं कर रहे हैं हम अभी। वी आर नॉट कंसर्न विद द एथिक्स ऑफ इट। हो सकता है हो सकता है ना हो, हमको नहीं पता है अभी। इसका जो अफेक्ट है वो अफेक्ट परनिशियस है, वो अफेक्ट नेगेटिव है, बिकॉज इट इरोड्स समथिंग कॉल्ड बिजनेस ट्रस्ट, समथिंग कॉल्ड ट्रांजैक्शन ट्रस्ट। ट्रांजैक्शन ट्रस्ट दो लोगों में एक बेसिक लेवल ऑफ ट्रस्ट होता है कि अगर हम कुछ डील कर रहे हैं या हम कुछ काम करना साथ में चाह रहे हैं तो हम कोलैबोरेट कर पाएंगे और एक दूसरों की बात रखी जाएगी। हमारा सामने वाला जो है दैट विल होल्ड हिज वर्ड। दिस ट्रस्ट डेफिशिट is the reason that mostly corruption is the worst thing possible for a system. There is no excuse for corruption, and it is very easy to do, by the way. And it is and I'll tell you why it happens. You know, I was asking, somebody was telling me something, and एक question मुझसे पूछा एक मेरे स्टूडेंट ने। उसने क्वेश्चन पूछा कि सर हमने सुना है, आई हैव हर्ड, शी आस्क्ड मी दैट देयर इज अ लॉट ऑफ करप्शन, एंड इफ यू डोंट डू करप्शन इन द सिविल सर्विसेज देन यू कैन नॉट सर्वाइव, you are forced to do corruption. So I am very worried about this, and um, I want you to answer this question. Am I going to face this pressure of corruption? And I was just smiling on the inside. मैंने जब question सुना तो I was smiling on the inside, and I'll tell you the truth about corruption. The truth about corruption, ladies and gentlemen, all you smart people, all you intelligent people, the truth about corruption is that nobody will force you to do it. You yourself will do it.
Why will you do it? Because of temptation. The root cause of corruption is greed. It is never need. करप्शन जब भी होती है या हो सकती है, उसके पीछे टेम्पटेशन होती है, उसके पीछे ग्रीड होता है, उसके पीछे कोई नीड नहीं होती है. देयर इज नो नीड फॉर एनी करप्शन एवर, but people do it. And you know, again, what leads to this temptation? Corruption is completely unethical. It is absolutely 100% unethical. You know, there is no debate about that. I am just saying why it is bad, and then I am saying why it happens. It happens because of greed. It happens because of temptation. It does not happen because of need. It doesn't happen because of pressure. It doesn't happen because you are forced to do it. That never happens. It will happen because you want to do it. And why will you want to do it? What leads you down that path that you may want to do it later? And I'll tell you why. Why? Because one, power and entitlement will convince you that you are special. पावर एंड एंटाइटलमेंट आपको कन्विंस कर देगी कि आप स्पेशल हो और सब कुछ मतलब आप ही का है. यू कैन जस्ट पार्टेक इन इट एंड गेट अवे विद इट. कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. आप अलग अलग तरीकों से उसको जस्टिफाई कर लो और आपको ये रियलाइज होगा कि आपकी जो एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, एज अ सिविल सर्वेंट, योर सैलरी इज अ सर्टेन अमाउंट. यू विल सी अराउंड यू अ लॉट ऑफ वेल्थ. यू विल सी कोई बड़ी गाड़ी में घूम रहा है, कोई बाहर जाके वेकेशन कर रहा है, कोई अपने बच्चों की बर्थडे पार्टी में बहुत सारे पैसे खर्च कर रहा है और आपके पास नहीं है बिकॉज ऑफ योर सैलरी. एंड यू विल फील अ डिसोनेंस. द डिसोनेंस विल बी दैट यू विल नॉट रियलाइज that you are not to partake in this wealth creation. आपको लगेगा अगर मैं स्पेशल हूं, मुझे इतनी इज्जत मिल रही है, इतना सब कुछ है, तो मेरे पास ये क्यों नहीं है? There must be something wrong. There is no reason why I can't have it all. धीरे 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 सोसाइटी के प्रेशर में, आपके खुद के सराउंडिंग्स के प्रेशर में करप्शन स्टार्ट होती है. It doesn't start because everybody is evil. No one is evil from the starting. These are the pressures which build up. And I'll tell you about bureaucratic political interference also. That is what you need to be careful about. My message here is, if you are interested in wealth creation, अगर आप wealth creation में interested हो, you should not get into the civil services. You should do it outside. You should do it outside. How do you decrease corruption? By becoming stricter with yourself, by knowing these things, by becoming clear about your motivations, by stopping and pausing and asking yourself why you want to do this. Is it wealth that you want? If it is wealth that you want, then you will be definitely tempted when the time comes. Don't think that you are a saint. No one is a saint. Some people have more resistance towards it, some people have less resistance towards it. That depends. But nobody is a saint. Now, I'll tell you about political interference. Political interference, many students have asked me. Many students have asked me, political interference kaise ho? Is it a big deal? I am telling you now, there is no problem with regards to political interference. No one has ever called me in my career. I have never received a phone call from a politician. I have never been told to do something which I necessarily did not want to do or anything like that. Political interference nahi hogi. The real problem will be bureaucratic interference. आपको होगी bureaucratic interference. That is not political interference. आपको interference होगी bureaucratic. आप experience करेंगे, you will experience. If you want to do something good, if you want to bring about a change, if you want to bring about a nice initiative, if you want some approval, अगर आपका कोई idea है, आप उसको execute करना चाह रहे हैं, आप बहुत अच्छे intentions के साथ, you want to change the system, what you will experience is bureaucratic interference. You will experience red tape. This is red tape. You will experience the same red tape that all the civilians face. You will experience the same red tape that various business people face. You will experience the same red tape for the reason that many international companies are hesitant to come to invest in India. They're hesitant to come to invest in India. This is bureaucratic red tape. The systems are slow. And bureaucrats do not want to take decisions, and they never want to take risky decisions. This is the reason for bureaucratic red tape.
It's a very large machine. It's a very cumbersome machine. It requires a lot of approvals. There are a lot of layers. Bureaucrats try not to take a decision as much as possible. You know why? Why don't they try? Why do they not want to take a decision? Because taking decisions is risky. Bureaucrats are smart. Taking decisions is risky. Some bureaucrats will take decisions and they also get into trouble for no reason, for no fault of theirs at some times. But this is a difficult environment to work. It is not easy. You have to, despite of all of these problems, you have to push through. That requires a lot of time and it requires a lot of energy. You can make a lot of difference. You can make a lot of impact, but the problem will not be from politicians. The problem will be from other bureaucrats. The problem will be maybe from your batchmates. The problem will be from your seniors. You know what their problem will be? उनकी problem क्या होगी? उनकी problem होगी ये. This will be their problem. Afflicted with power, not resistant to change, not resistant to change, not resistant completely. Um, egoistic. They can become egoistic after a certain age, and they can lose touch with reality. उनकी problem होगी ये. This is what you will be ultimately facing. But, however, and now I will tell you certain things about what to expect. ये तो होगी problems. आगे what will happen and what kind of a job profile can you expect? Is the civil services still worth it despite all these problems? The answer is yes. Yes. There is no job like it. Civil services जैसा job कोई नहीं है. Because of the simple reason that it gets you access to this privileged, different view of society. You see society from a different angle which you cannot see society from as a civilian. आपको वो exposure मिलेगा, वो आप देख पाओगे society को at its complete bare naked. You will see things which others cannot see. You will experience things which others cannot experience. This is the beauty of it. इस जॉब में एक अलग टाइप का मजा है. You have the impact. Things are in your hands. You make a mistake, things break and everybody suffers. You don't make a mistake, everybody's happy. You will be very satisfied, very happy when you do good things. Very happy indeed. आपको impact दिखेगा, आपको अच्छा लगेगा और you will feel proud. पर उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. It does not come automatically. It does not come easily. Because of this impact, in the changing environment, the world is changing. बहुत जल्दी the world change कर रही है and every time I see, the UPSC, I've observed it for 10 years. 10 साल से मैंने इस एग्जाम को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है. The UPSC will always recruit for the requirement of the government. वो गवर्नमेंट के challenges को मीट करने के लिए रिक्रूट करते हैं. The UPSC does that. जो आप अपने सिलेबस में देख रहे हो, एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, स्ट्रेस ऑन एनवायरमेंट फॉर इंस्टेंस, ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये रेलेवेंट इशू है. ये इसलिए है क्योंकि ये एक्चुअल चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए. देयर इज अ मिनिस्ट्री नाउ व्हिच हैज टू डील विद दिस एंड द होल वर्ल्ड इज looking towards India as the center stage. It's the center stage of this whole climate change debate, of this whole environment debate. अब इंडिया को अपनी डेवलपमेंट भी मेंटेन करनी है, अपने अपने इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस भी करने हैं, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट भी करना है और खुद का नुकसान भी नहीं करना है. द नेशन शुड नॉट सफर. अब ये सब चीजें कैसे करोगे आप एक साथ? लॉजिकली स्पीकिंग इट डजंट वर्क दैट इजीली. इतना आराम से नहीं होता है. इट्स नॉट इजी टू डू दैट. दिस इज अ चैलेंज विच somebody will have to meet. That is why they keep asking you about climate change. Why do you think they keep asking you about technology? They ask you about technology because technology is the fundamental tool that we will now use. The bureaucrat of tomorrow, the civil servant of tomorrow, a good one will be one which has a mastery over technology and the one who understands it better. This is the next big thing. It is the next big thing which the government is challenged to do. आपका चैलेंज होगा टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना, उसको अच्छे से यूज करना और इसकी जो भी एप्लीकेशंस बने उनको रेगुलेट करना ताकि लोग एक दूसरे का नुकसान ना कर पाए. What else can you expect? You can expect that corruption will go down. करप्शन कम होगी, कम हो रही है और कम होती चली जाएगी धीरे धीरे as technology improves. You can expect
that the work will get more challenging, but it will also get more rewarding. The work will get more challenging, but it will also get more rewarding. You can expect more international exposure now that you go into the job. You can expect the role of technology to improve a lot in the years to come. You can expect that the UPSC will become more and more specific towards challenges, and they will ask you questions accordingly. These are the expectations that you can have. It is still a beautiful job. There is love and there is a passion to this job, but it is not for everyone. It is not for everyone, and it is definitely not for those who want to create wealth. So should you pursue a career? That is the fundamental question. आपको करना भी चाहिए कि नहीं? सबसे पहली बात, one reason why you should not do it. I'll tell you two reasons why you should not do it, and I'll tell you two reasons why you should. मैंने बता ही दिया वैसे तो, but I will still summarize it for you. एक, पर्सनल वेल्थ क्रिएशन करने के लिए नहीं करना है ये. डोंट डू इट. आप उल्टे सीधे काम करोगे, गलतियां होंगी, खुद का नुकसान होगा, बाकियों का भी नुकसान होगा, आप प्रॉब्लम्स में फंसोगे, आपको दिक्कत होगी और आप बहुत परेशान हो जाओगे. योर मेंटल पीस विल बी डिस्ट्रॉयड. डोंट डू दिस. Do not get into it for wealth creation. Do not get into it for fame. Do not aspire to be a social media sensation. सच बात तो ये है, बॉटम लाइन ये है कि सिविल सर्विसेज के जो कॉन्डक्ट है, जो एक्सपेक्टेड कॉन्डक्ट है, जो टेक्निकली एक्सपेक्टेड कॉन्डक्ट है, वो एनकरेज नहीं करता है कि सिविल सर्वेंट्स फेम की तरफ अट्रैक्ट हो. कुछ लोग हमेशा होते हैं. अगर इफ यू टेक अ सैंपल सेट of 1,000 people, of course there will be 1% who are more attracted towards that side. That's okay, but it is not welcome. बहुत अच्छा साइन नहीं है. सिविल सर्विस के कॉन्डक्ट का जो आइडिया है वो ये है कि सिविल सर्वेंट शुड बी इन द बैकग्राउंड में होना चाहिए. खुद की ओर नहीं होनी चाहिए. खुद की पर्सनल वेल्थ क्रिएशन, खुद के फेम पे ध्यान नहीं होना चाहिए. ध्यान होना चाहिए पूरे के पूरे सिस्टम पे. उस सिस्टम में काम करने का, उस सिस्टम को इंप्रूव करने का एक मजा है. वो मजा ले सकते हो आप. यू कैन एंजॉय दैट एंड दैट इज अ ट्रूली ग्रेट प्रिविलेज. बट खुद के लिए अगर आपको वो करना है तो वो नहीं. दैट इज नॉट व्हाट इट इज. नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, coming to one of the last things I wanted to say. I will not keep this very long and will be very short and abrupt about the main points here. The main points here. You and I are now locked in a very interesting time. You and I are at an interesting time. When I ask people, sometimes I ask my students, how do you feel about India's prospects? India कहाँ जा रहा है और आपको क्या लगता है? What most people I see is that India is going downhill, or yeah, downhill है या uphill है पता नहीं, but मतलब the world, they don't have a faith in the society. And here is a fact, and the fact is that we live in the most prosperous time in history globally. ये टाइम अभी तक का ह्यूमैनिटी का सबसे प्रोग्रेसिव और सबसे अच्छा टाइम चल रहा है जिसमें हम आज हैं. वी आर लकी टू बी अलाइव. लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्वालिटी ऑफ वेल बीइंग, the level of healthcare, the level of technology, the level of comfort, the level of per capita income, everything is the highest that it has ever been. Highest. And here is what is going to happen now to India. India will grow, and India will grow fast. You know why India will grow fast? Because we are now entering a capitalist model. कैपिटलिस्ट मॉडल में कुछ प्रॉब्लम्स हैं. श्योरली देयर आर प्रॉब्लम्स विद इट, बट अभी इंडिया का बूम टाइम है. दोस प्रॉब्लम्स विल कम मे बी लेटर, एंड इफ द गवर्नमेंट एंड द आरबीआई एंड ऑल द प्लेयर्स आर एक्चुअली रेगुलेटेड प्रॉपर्ली, देन दे माइट इवन बी एबल टू सबवर्ट इट. अभी तो इंडिया में स्टार्ट हुआ है बूम. आई एम हाईली इन्वेस्टेड इन इंडिया. आई एम पर्सनली फाइनेंशियली इन्वेस्टेड माय savings in the Indian economy because I have faith in it. And I don't have faith in it because of illogical reasons. I have faith in it because I look outside my window and I see people with aspirations. I see people bubbling with potential. I see entrepreneurship everywhere. मैं हर जगह देखता हूँ कोई स्टार्टअप, कभी कोई कुछ, and I see this rise in consciousness as the internet has spread. अब हमारे हाथ
एक बहुत पोटेंट टूल लग गया है बहुत सस्ते में. We have in our hands a very potent tool which has been given to us for very cheap, and that is technology. And because we are hustlers, we are Indians. We are as a general population, we are known to be more hardworking than normal, and we will be able to climb this up. Not everybody will climb it. सोसाइटी में प्रॉब्लम्स तो हैं ही, सोसाइटी में प्रॉब्लम्स रहेंगी, सोसाइटी में प्रॉब्लम्स कहीं जाने नहीं वाली हैं. आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक राइज ऑफ इंडिया. My question is, I'm not talking about theoretical things. My emphasis is, my argument and my suggestion is that you ride this wave. हमको इस वेव को राइड करना है. हमको इसकी डिबेट नहीं करनी है, हमको इसकी एकेडमिक एनालिसिस नहीं करनी है, हमको तो राइड करना है इसके ऊपर. कुछ ना कुछ इंडिया में ऊपर जा रहा है ना. You can see that happening, right? We have to ride that. Go along with it. You don't want to miss the train. Do not miss the train. Now, how not to miss the train? How will you ride this wave of new India? If you get into the UPSC and if you do the civil services, then you are obviously part of it. आप उसके पार्ट हो ही. आपके सर्विस और आपकी जो लिविंग कंडीशंस हैं, हर चीज इंप्रूव होगी. आप फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करोगे उस राइड को. बट नाउ if you really want to ride the new India, you have to understand that we are in a period of massive wealth creation. India में every day millionaires are being created, and these millionaires are not being created because of unethical means. You know why they are being created? Why are millionaires being created in this country of ours? Why? Because they are figuring out ways to add value to the economy. अगर आपको इस नए इंडिया की वेव को राइड करना है तो यू बी अ entrepreneurial person. जरूरी नहीं है कि बिजनेस खोलना है हर किसी को. बी entrepreneurial person. Don't be just a consumer. Don't be just a consumer. You be the person who can add value to the economy. अगर किसी ने ईयरफोन्स बनाए हैं, अब बोट इज अ कंपनी जिसने बहुत अच्छे ईयरफोन्स बनाए, उन्होंने इंपोर्ट करा या जो कुछ भी करा, they have become very famous. बोट. Many entrepreneurs, you can take Unacademy, you can take people in the edtech sector, जिसके साथ आप बहुत familiar already हैं. They have created value. जिस कंपनी को हम अभी यूज कर रहे हैं, YouTube, Google, that's a company. Although it's not an Indian company, but ये उन्होंने value create करी है हमारे. That is why we are able to communicate for free, virtually for free, through space and time. ये पहले कहाँ होता था? ये पहले नहीं था possible. Now it is so easy. I click a button and I'm live, and we are live in real time. That is not a joke. That is magical. And these are the things which are enabling us slowly. This is how you ride the wave of New India. Broaden your horizons. There is a lot that is happening, and it is a beautiful time. Beautiful time. अगर आप चाहो तो आप सिविल सर्विसेज की तरफ जा सकते हो, गवर्नमेंट साइड की तरफ जा सकते हो. वहां पर बहुत, there is a lot of scope. You will have a lot of impact. You will have a lot of satisfaction. You will have a lot of respect. You will not have unfettered power. You will not have a kingdom. You will not have personal wealth, but you will have a lot of other things which they don't have, which businessmen do not have. This, I think, is the crux of what I wanted to tell you. And you know, the Independence Day happens and it comes. Independence Day hota hai, and we all wish each other Independence Day. But what is the meaning of it? What does it mean to say Happy Independence Day? Iska significance kya hai? So I thought that maybe, just maybe, today I can come and meet you and I can give you some perspective where we were, where we are going, where are you in this situation as far as the UPSC exam is concerned, where is the civil services, which train do you want to board? Do you want to go in this direction or that direction? If you want to go in this direction, then what can you expect in the civil services? How do you approach it? If you want to go in the other direction, then what to expect and how do you ride that wave of New India? That is what I wanted to tell you. A very practical and I hope useful discussion to expand your mind to actually know where you are, you know. And I'm always happy to share such insights with you, although I wish I could do it more often, but my time is very restricted and I have to do a lot of things in my time. So I will surely keep meeting you guys again. I hope that you had some interesting conversation today. You learned a thing or two. You have some perspective. And, you know, like I always say, if you want to make this Independence Day actually
about independence, and if you want to make it actually about happiness, then you do something for the others. You create value for the economy. If you create value for the economy, you will get money. You will create value for your family. You will create value for others. Business is not bad. Commerce is not bad. Capitalism is not inherently bad. It's how you use it. Where there is so much scope, there is so much scope for brilliance. And you have the brilliance, you have the intellectual horsepower, you have the capability. You are here on the evening of a holiday listening to me. So you are that selected group of people जिसके लिए ये message appropriate है. This is a message which I think is highly appropriate for you guys. I hope that it has been helpful, and I will continue to meet you again. Thank you very much. Good night. Happy Independence Day. And as always, take care. Good night.